Next, we have to start with the Gauss law. Gauss law था क्या? Gauss law basically हमने Coulomb's law पढ़ा कि Coulomb's law is for finding the electric field intensity due to point charges. But normally point charges नहीं होते. Thing हो सकता है disk sphere, hollow sphere, sheet. So किसी का भी electric field intensity निकालना है charge distribution का, not point charge, तो ये require Gauss law. तो Gauss law से पहले हम एक topic करते हैं which is rapid as electric flux. We say it's the measure of number of electric lines of force passing through any closed surface or any surface. Measure of number of electric lines of force. क्लोज्ड सरफेस के लिए हम तीन केस ले लेते हैं. पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, and zero flux. Positive flux होता है if number of electric lines of force entering are less than number of field lines leaving. Leaving are more than entering. तो net flow outwards है field lines का. Simple हम कह सकते हैं if net charge is positive, net charge inside closed surface. और closed surface के अंदर net charge positive है तो positive flux. Negative होता है if field lines entering a move. Negative charge inside surface. Again, net charge inside surface negative. Zero means जितनी enter की उतनी leave की. Number of field lines entering and leaving are same. Net charge inside is zero. Net charge zero. Net charge inside it is zero. Next is इसको हम यूज करके गॉस लॉ को ड्राइव करेंगे. गॉस लॉ बेसिकली था कि अगर हम क्लोज सरफेस लेते हैं electric flux through closed surfaces net charge enclosed upon epsilon naught ऐसा ही. अब इसको मैं 4 पाई से मल्टीप्लाई या 4 पाई से डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकता हूँ. सीजीएस में इसकी जगह 1, ये सीजीएस में हो जाएगा. एसआई में क्यू enclosed upon epsilon naught, सीजीएस में 4 पाई क्यू. Gauss law is used to find the electric field intensity for charge distribution.
It's used to find electric field intensity due to charge distributions. नॉर्मली हम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही करेंगे कि हमारे बोर्ड के सिलेबस में तो दो ही है, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज एंड इनफाइनाइट शीट, बट कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम एडिशनल कर लेते हैं. सो अगर मेरे पास पहले इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, कि मेरे पास इस फॉर्म में है कि मेरे पास इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, मेरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एट अ डिस्टेंस आर निकालना है. गॉसियन सरफेस सिलेंडर बना लेते हैं. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेसेस की, अगर इसकी लेंथ एल है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस जो हम ले रहे हैं, दैट इज लैम्डा एल. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी 1/4 पे एप्सिलॉन और 2 लैम्डा बाय आर. इसी में इसमें न्यूमेरिकल भी था कि अगर लाइन चार्ज के आसपास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालो. तो हम ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट फोर्स. तो फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब E इनटू लैम्डा बाय आर, दिस प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. सेकेंड होता है इफ यू हैव इनफाइनाइट शीट, चार्ज डेंसिटी सिग्मा. मेरे पास ये शीट है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा. तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एट एनी पॉइंट पी, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम शीट. यहाँ पे इनवर्स लॉ था. इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट. इनफाइनाइट शीट होती नहीं है, हमने एज्यूम किया कि इनफाइनाइट शीट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इफ दैट डिस्टेंस इज स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ शीट. डिस्टेंस एट विच is small as compared to size of शीट. So that distance is small, तो हम उसको कह देते हैं कि that's an infinite sheet. बट अगर हमारे पास दो शीट्स हैं, उसमें दो केस हो सकते हैं. You can have both the sheets as positive, or you can have one sheet positive, other sheet is negative. अब ये शीट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, चार्ज डेंसिटी अलग है. इसमें ये शीट पॉजिटिव, ये नेगेटिव. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर निकालना, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम इधर भी सेम,
उसमें इट्स डिफरेंस, अगर मैं ले रहा हूँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है तो सिग्मा 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर 0, इधर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली दिस इज सिग्मा 1, दिस इज माइनस सिग्मा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है इक्वल्स टू सिग्मा, दिस इज 0, बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सो सेकंड केस इज द कैपेसिटर केस जो हम करते हैं। The electric field between the plates of capacitor is sigma by epsilon naught, and outside the two plates electric field intensity will be 0. So between the plates it's sigma by epsilon naught. तो ये तो दो बोर्ड के केस हैं कि अगर हमारे पास लाइन चार्ज है तो इट्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, शीट है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दो शीट्स है तो दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे बाय फाइंडिंग द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर है, शेल और कंडक्टिंग स्फीयर को एक साथ कर लेते हैं बिकॉज कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही होता है, बीच में कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हम शेल और कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, दोनों में चार्ज सरफेस पे है, बीच में चार्ज नहीं है। रेडियस आर, अगर हम किसी पॉइंट आर को इंटरनली लेते हैं तो बिकॉज इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। सरफेस पे निकालेंगे और एक से एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालेंगे। तो अगर फॉर एनी इंटरनल पॉइंट electric field intensity will be 0. Point on surface, external point, और ये पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला है। That means external point के लिए और point on the surface के लिए we can assume whole charge to be concentrated at the center in the form of point charge. That is for external point. Point on surface. Whole charge concentrated at the center of C. ये assume कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को आगे हम पोटेंशियल में यूज करेंगे बिकॉज जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगी। सेकेंड होता है कि इफ यू हैव अ सॉलिड स्फीयर with uniform distribution of charge, अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे के अंदर चार्ज सरफेस पे नहीं है सर, सो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, then we say that electric field intensity is given by, अगर हम एट अ डिस्टेंस r निकालते हैं सेंटर से, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है तो इट्स QR by R3, और in terms of density you can also write it as E increases as we move away from the center.
सरफेस पर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सेम एज शेल, वही फॉर्मूला आएगा जो स्फेरिक है। इसमें भी हम कह सकते हैं फॉर एक्सटर्नल पॉइंट and for point on the surface you can assume charge to be concentrated at the center। ग्राफ बनाएंगे अगर, पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी सरफेस तक, surface पे electric field maximum and then it follows in Gauss law। This is for solid sphere। अगर मैं शेल का या कंडक्टिंग स्फीयर का बनाता, inside it's zero at all points, rises to maximum value। एक्सटर्नल का ग्राफ तो सेम है, इंटरनल में इनसाइड इट विल बी जीरो। सो ये दोनों ग्राफ्स में से इतना फर्क है कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसमें इंटरनल पॉइंट्स पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बाकी सारा ग्राफ जो है वो सेम बनेगा। सो ये नॉर्मली गॉस लॉ के केसेस है जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन पता है तो देन वी कैन फाइंड द पोटेंशियल आल्सो एट डिफरेंट पॉइंट्स। कि अगर हमें ई पता हो तो हम वी की वैल्यू को निकाल सकते हैं या वी के बारे में कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं।